my YouTube channel Study with Karam sir. I hope you will be fine. Last lecture के अंदर हमने स्टडी किया था वर्क डन, डेफिनेशन ऑफ वर्क डन एंड उसकी यूनिट्स इन एसआई सिस्टम एंड इन सीडीए सिस्टम. Today we will discuss about some special cases of work done. Special cases के अंदर हम थीटा that is the angle between force and displacement उसकी डिफर वैल्यूज को लेके चलेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, देन उस केस के अंदर जो वर्क डन है वो क्या होगा. सो फर्स्ट इज when the body moves along the line of action of force. I repeat, when the body moves along the line of action of force, mean to say, if we apply some external force on a body, then it moves along the line of force. For example, we have a body at position A. If we apply a force, external force, then the body changes its position from A to position B and travels some displacement x, then work done which is equal to f(x) cos थीटा. इस केस के अंदर जिस डायरेक्शन के अंदर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है उसी डायरेक्शन के अंदर बॉडी की मूवमेंट हुई है. तो इट मींस इस केस के अंदर जो थीटा है विच इज द एंगल बिटवीन f एंड x उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. टेक theta is equal to 0 degree because force in the forward direction and displacement x also in the forward direction, so they are parallel lines. It means angle between the parallel lines, जो parallel lines के बीच में angle होता है वो हमें पता है कि that is 0 degree. So it means f(x) cos theta is equal to 0 degree or cos 0 which is equal to 1, w which is equal to fx. This is the work done when body moves along the line of action of force. Next is when the body moves perpendicular to the line of action of force. Action of force. इस केस के अंदर when the body moves perpendicular, जब बॉडी परपेंडिकुलर मूव कर रही है टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक बॉडी एक हॉरिजॉन्टल टेबल है हमारे पास जो कि स्मूथ है और उसके ऊपर मूव कर रही है, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स मींस m into g. m mass, g acceleration due to gravity that acts perpendicular to the direction of displacement. जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है
जो बॉडी मूव कर रही है डिस्प्लेसमेंट में, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। अनदर एग्जांपल इज सपोज अ कुली कैरिंग अ सूटकेस, एक कुली है जिसने एक सूटकेस को कैरी किया हुआ ऑन हिज हेड। देन इस केस के अंदर जो कुली फोर्स अप्लाई कर रहा है उस सूटकेस को होल्ड करने के लिए, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द डायरेक्शन इन विच ही मूव्स। जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है उस डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर जो कुली है वो मूव कर रहा है। देन टेक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। We know that work done which is equal to fx cos theta. Put here theta is equal to 90 degree. Fx cos 90 degree. We know that cos 90 is equal to 0. That means fx with multiply by 0 which is equal to 0. Work done in this case is 0. When the line of action of force that is perpendicular to the displacement in which the body moves, इस केस के अंदर हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। थर्ड वन इज when the applied force means that is external force acts opposite to the direction of displacement, to the direction of displacement. For example, एक पर्सन है जो बाइसाइकिल को ड्राइव कर रहा है, देन सडनली ही अप्लाई अ ब्रेकिंग फोर्स। अगर वो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है उस केस के अंदर जो बाइसाइकिल मूव कर रहा था वो मूव करना स्टॉप कर देगा। इट मींस जो अप्लाइड फोर्स है, मीन टू से जो ब्रेकिंग फोर्स है, दैट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बाइसाइकिल की मूवमेंट फॉरवर्ड थी और जो ब्रेकिंग फोर्स है उसने उस बाइसाइकिल को मूव करने से बंद कर दिया। इट मींस दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट, थीटा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस केस के अंदर जो थीटा है उसकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। वर्क डन fx cos theta. Put here the value of theta which is equal to 180 degree. We know that cos 180 which is equal to -1. Work done which is equal to minus fx. इस केस के अंदर जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा अगर जो ब्रेकिंग फोर्स है, दैट इज जो अप्लाइड फोर्स है, अगर वो एक्ट करेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस इस के अंदर जो बाइसाइकिल है वो मूव कर रहा था। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और हमारे पास वर्क डन नेगेटिव है। फोर्थ वन इज when the force is unable to move the body. I repeat, when the force is unable to move the body. For example, if we try to push the wall, अगर हम वॉल को पुश करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, देन जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस केस के अंदर वो सफिशिएंट नहीं है, तो इट मींस जो डिस्प्लेसमेंट है
डिस्प्लेसमेंट x which is equal to 0, इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो सफिशिएंट फोर्स नहीं है। तो वर्क डन क्या होगा, पुट x is equal to 0 degree here, 0 which is multiplied by cos theta, that is 0। इस केस के अंदर जो वर्क डन है वो 0 होगा। सो व्हेन द फोर्स, अनसफिशिएंट फोर्स हम ये कह सकते हैं, इज अनएबल टू मूव द बॉडी, उस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगी। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन हमारे पास 0। लास्ट स्पेशल केस, फिफ्थ इज व्हेन the force is 0, when the force is 0. For example, if a body moves on a smooth horizontal table, हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर मूव कर रही है, देन इस केस के अंदर जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन F is equal to 0। if F is equal to 0 then work done will be 0। इस केस के अंदर भी जो वर्क डन है वो 0 होगा। I repeat, if a body move on a smooth horizontal table, then we know that there is no friction। if there is no friction then work done in this case will be 0। so ये हमारे पास थे वर्क डन के स्पेशल केसेस। आई होप ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके जो भी डाउट्स हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क डन के यूनिट्स इन एसआई सिस्टम एंड इन सीजीएस सिस्टम, इसके स्पेशल केसेस, थीटा की जो डिफर वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है, वो सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।